Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the third lesson, that is solitary reaper, a poem. Okay, page number 27. So let's begin. First of all, we will translate it. After translation, we will do the paraphrase and explanation of it. Right? Okay, so first of all, let's begin the translation. सैलेटरी रीपर मीन तन्हा काटने वाली, फसल को काटने वाली तन्हा लड़की या औरत या जो भी हो, लेकिन सैलेटरी तन्हा, रीपर काटने वाली. Behold her single in the field. Behold her, उनको देख लो. Single in the field, वो खेत में अकेली है. Behold her सो फीमेल की तरफ इशारा है. Behold her. Young solitary highland lass. Young, it's old English. In the typical world glossary, you can see young, the last word, that. Mean wo. Solitary highland lass, tanha. Solitary mean tanha. Highland lass mean पहाड़ी लड़की. वो पहाड़ी लड़की अकेली है और खेत में अकेली है और इनको देख लो. Young solitary highland lass, वो तन्हा पहाड़ी लड़की. Highland also आप अगर मीनिंग में देख लें, so belonging to the mountainous area of western and northern Scotland, मीन मगरबी और शुमाली स्कॉटलैंड के जो पहाड़े हैं वहाँ से वो ताल्लुक़ रखती है, तो उनको देख लो. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो फसल को काटती है और ख़ुद अपने साथ गाने गाती है. रीपिंग फसल काटती है, एंड सिंगिंग और गाने गाती है, बाय हरसेल्फ अकेली. बाई जब आ जाए तो इसका माना अकेली फिर हो जाता है. स्टॉप हियर और जेंटली पास, क्या मैं यहाँ खड़े हो जाऊँ या आराम से गुजर जाऊँ. स्टॉप हियर, हम यहाँ खड़े हो जाएं, या और जेंटली पास, या आराम से गुजर जाए ताकि उनको पता न चल जाए और उनके गाने डिस्टर्ब न हो जाए, गाना डिस्टर्ब न हो जाए. सो फिर कहते हैं कि एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. एलान शी कट्स, वो अकेली काटती है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, और गठलियाँ बनाती है इन दानों के, या बाइंड्स बांधती है, द ग्रेन इन दानों को, इस फसल को बांधती है मतलब उनके गठलियाँ बनाती है. ओ या एंड सिंग अ मेलनखाली स्ट्रेन, और गाती है एक गमगीन या दुखी हुई नगमा. एक स्ट्रेन मीन नगमा, मेलनखाली मीन जिसके मूड जो हो मेलनकालिक हो, दुखी हुई हो, दिलदोज हो. एक दिलदोज गाना या नगमा गाती है और अकेली फसल काटती है. एंड सिंग मेलनकॉली स्ट्रेन, और एक गमगीन नगमा गाती है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. ओ लिसन, ओ सुन लो उनको, ए लोगो सुनो या आरे सुनो. फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि ये सारी वादी गहरे अंदाज में, इज़ ओवरवेलमिंग विद द साउंड, इस आवाज़ के साथ गूंज रही है. सारे वादी भी इस आवाज़ के साथ गूंज रही है, या सारी वादी से ये आवाज़ भरपूर है. हर जगह में ये आवाज़ गुनगुनाहट करती है और भरा हुआ है ये आवाज़. नो नाइटिंगेल डिड ईवर चेंट, किसी भी बुलबुल ने भी ऐसा नहीं गाया है. मोर वेलकम नोट्स, ज़्यादा इस्तकबालिया वाले गीत. नोट्स आल्सो गीत. टू द वेरी बैंड, तक्के मानदे मुसाफिरों को, या तक्के मानदे कारवा को किसी बुलबुल ने भी इतनी मीठी नगमा नहीं गाई है जितने ये लड़की गा रही है. ऑफ ट्रेवलर इन सम शेडी हैंड, यानी अ वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर, मुसाफिरों के एक तक्के मानदे कारवा को. इन अ शेडी हॉन्ट, एक सायेदार नखलिस्तान में. एमोंग अरेबियन सैंड, अरब के सहराओं में, यानी अरब के सहराओं में एक सायेदार नखलिस्तान में बुलबुलों ने भी कभी इतनी खूबसूरत गाना तक्के मानदे मुसाफिरों को ग्रोह को नहीं गाए हैं जितना ये लड़की गा रही है. A voice so thrilling never was heard, इस तरह पुरजोश और महजूज आवाज़ कभी भी नहीं सुना गया है. In spring time from the cuckoo bird,
मौसम बहार में कुक्कू परिंदे से भी किसी ने इतने खूबसूरत आवाज़ में गाने नहीं सुने हैं। वो कुक्कू भी बहुत, कोयल भी बहुत अच्छे अंदाज में गा रही है, लेकिन उन्होंने भी इतने अच्छे अंदाज में कभी नहीं गाए हैं। Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides, कौन से कुक्कू, तो यहाँ पर वो मवाजना करता है उस लड़की के गाने की और कोयल के गाने की। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समंदरों की खामोशी को तोड़ती है, वो कुक्कू की जो आवाज़ है वो समंदर की खामोशी को तोड़ती है। among the farthest Hebrides, यानी ये हेब्रिडिस के दूर दराज जजीरों के दरमियान। हेब्रिड इज आल्सो इन द मीनिंग यू कैन सी द आइलैंड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड के मगरबी साहिल के करीब जो आइलैंड्स हैं, जो जजीरे हैं, तो इसमें कोयल जो गाने गाते हैं और समंदर की खामोशी को तोड़ती है, तो वो भी इतनी मीठी आवाज़ नहीं होती है जितने इस लड़की की ये आवाज़ है। Well, no one tell me what she sings. अच्छा, कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा, या कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। मतलब ज़ुबान वर्ड्सवर्थ की ज़ुबान से मुख्तलिफ है उनके कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद perhaps या perhaps the plaintive number, ये गमगीन गाने जो है फ्लो जारी है। For all unhappy far off thing, यानी पुराने नाखुश और भूली बसरी चीज़ों के बारे में है। माजी में कोई नाखुश वाक़यात हुए हैं और शायद उसी ही के बारे में ये नगमे है। एंड बैटल लॉन्ग अगो, या पुराने ज़माने के लड़ाइयों के बारे में ये नगमे है। और इज़ इट सम मोर हम्बल, या ये कि ये कोई ज़्यादा अजज़ नगमा है या आम नगमा है। हम्बल से यहाँ एक आम सी नगमा है। फेमिलियर मैटर आफ्टर डे, आज कल या हालिया वाक़यात से जानी पहचानी, यानी हालिया वाक़यात की अक्कासी कर रही है, क्योंकि ज़ुबान वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आती है। सम नेचुरल सारो लॉस ओफेन, कोई कुदरती या फितरती गमों के बारे में। लॉस मीन नुकसान या मौत के बारे में, और फेन या दर्द के बारे में गाने गाती है वो। That has been and may be again, यानी कोई ऐसा हालिया नुकसान हो या कोई मौत हो या कोई दर्द हो या कोई दुख हो। That has been, जो गुज़र चुका है, and may be again, और शायद दोबारा आ जाए, तो उसके बारे में वो ये गाने गाती है। Whatever the theme the maiden sang, थीम जो भी हो, इसका मौजू जो भी हो, लेकिन ये कनवारी लड़की मेडन सेंग गाती रही। As if her song could have no ending, और ऐसा दिखाई देती थी कि उनके गानों की कोई इख्तिताम नहीं था, उनके गाने का मुसलसल गाती रही थी। I saw her singing at her walk, मैंने उनको देखा कि वो अपने काम कर रही थी और गाने गा रही थी। I saw her singing, मैंने उनको गाती हुई देखा। at her work, अपने काम में मसरूफ़ हालत में वो गाती थी। एंड ओवर द सेकल बेंडिंग, और अपने दरांती पर झुकी हुई थी। एंड ओवर द सेकल, और अपने दरांती पर बेंडिंग झुकी हुई थी। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने सुन लिया उनके गानों को बेहरकत और खामोश खड़ा था। मतलब मैं एक जगह पर खामोश खड़ा था और उनके गानों को सुनता रहा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जोन ही मैं पहाड़ पर फिर चढ़ता गया, आखिरकार उनके गाने को काफ़ी वक्त तक सुनकर फिर मैं तो आगे जा रहा था। तो फिर हमें जब पहाड़ पर चढ़ गया, माउंटेड अप मीन चढ़ना, द हिल पहाड़ पर। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, तो वो म्यूज़िक जो ये लड़की गा रही थी वो मैंने अपने दिल में रखी हुई थी। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, इससे काफ़ी देर बाद, जब ये मज़ीद नहीं सुनाई दे रही थी ये म्यूज़िक, लेकिन वो मेरे दिल में थी और मैं अपने जहन में और दिल में वो म्यूज़िक सुन रही थी इस लड़की की। सो दैट इज़ द translation. Now we will do the paraphrase as well as the explanation. Both of them we will do. As you know, dear student, that in the exam, two type of question come from poetry. One is paraphrase.
तो पैराफ्रेज मीन जस्ट चेंज फ्रॉम द वर्स लैंग्वेज टू द प्रोज लैंग्वेज, इसको नज़म की ज़ुबान से नसर की ज़ुबान को चेंज कर लो. And so far the explanation is concerned, so there are four points in the explanation. First of all, we have to tell the name of the poem, that the stanza is taken from which poem. Secondly, we tell the name of the poet, that who is the poet of this poem. Thirdly, we use a capsule summary or a short summary of the whole poem, that what's the poem's about. And fourthly, we explained the given sentences. We can add our own likes and dislikes as well. In paraphrase, we shouldn't add our own likes and dislikes, but we should just change from the poetry language to the prose language. But in explanation, we can explain according to our own point of view as well, what the poet says. So now we will do the paraphrase as well as the explanation stanza by stanza. So let's begin again. Solitary reaper, तन्हा फसल काटने वाली. Behold her single in the field, उन्हें ज़रा देख लो खेत में अकेली है. Young solitary highland lass, वो तन्हा पहाड़ी लड़की. Reaping and singing by herself, जो फसल काटती है और अपने साथ गाने गाती है. Stop here or gently pass, क्या मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ या रुक जाऊँ या आराम के साथ गुजर जाऊँ. तो जब पैराफ्रेज अगर हम इस स्टेंजा के करते हैं, तो इन दिस स्टेंजा द पोएट सीज अ गर्ल who is singing in the sees a girl who is singing in the field, and the girl belong to the mountainous area. She's reaping the crops and singing as well. The poet says whether I should stop here or should go slowly, that she shouldn't understand. So that is the paraphrase. Now if we say the explanation, so in explanation, first of all, reference to the context is important. So in the reference to the context, I have read over here, I have wrote over here, so that you should also read it. This stanza has been taken from the poem Solitary Reaper से लिया गया है. This poem has been composed by Wordsworth. Wordsworth ने ये poem compose किया है, बनाया है. In this poem the poet describes, ये पहला नज़म का नाम हुआ, दूसरा शायर का नाम, और तीसरा कैप्सूल समरी है अभी. In this poem the poet describes the scene of a lonely mountainous girl. एक तन्हा पहाड़ी लड़की की मंजरकशी कर रही है in a valley, एक वादी में. She was harvesting the crops and singing a sweet song. वो फसल काट रही थी और एक मीठे गाना गा रही थी. Although the poet didn't understand the language of the song, अगरचे शायर को इस लैंग्वेज की पता नहीं था कि कौन सी ज़ुबान है. He was much impressed by the song of the girl, लेकिन वो इस लड़की के गाने से बहुत मुतासिर हुआ. The tone and music of the song become a part of his memory. इस गाने के जो साज थे और जो म्यूज़िक थे वो इसकी मेमोरी का एक हिस्सा बन गया. And he could enjoy it long after it was not heard. और वो इस गाने को इस वक्त भी इंजॉय करता था जो नहीं सुनाई दे रहा था उनको, लेकिन उसके दिल में और जहन में और ख्यालात में वो गाना जारी थी. तो यही कैप्सूल समरी हो गया. अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन अभी करते हैं, so we will tell that in this stanza the poet says that I was going on a mountainous area. When I was going, so on the way I saw a field. In the field there was a girl. The girl was reaping the crops, and she was singing by herself. She was alone there and she was singing by herself, and her voice was so sweet that I was embarrassed from her voice, and I thought in the heart of my heart that whether I should stop here or pass from this land slowly, so that the girl shouldn't understand or shouldn't sense me and shouldn't stop his singing. So I think if you write so much, so that's also right. Now the second stanza. Alone she cuts and binds the grain. वो अकेले फसल को काटती थी और गठड़ियाँ बनाती थी. And sang a melancholy strain, और एक गमगीन नगमा गा रही थी. Oh, listen for the well profound
ओ देखो क्योंकि सारी गहरी वादी जो है इज़ ओवरवेलमिंग विद द साउंड, इस आवाज़ से वह गूंज रही है, इस आवाज़ से भरपूर है सारी वादी. So first we will write this. This stanza has been taken from the poem Solitary Reaper. This poem has been composed by Wordsworth. In this poem, the poet described the scene of a lonely mountainous girl in a valley. She was harvesting the crops and singing a sweet song. Although the poet didn't understand the language of the song, he was much impressed by the song of the girl. The tone of music and the song became a part of his memory, and he could enjoy it long after it was not heard. तो इसी तरह हर एक स्टेंजा के साथ हम ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख लेंगे. द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर सेज that girl was alone over there, and she was cutting the crops over there, and then he was making the grain as well, or he was making the bundle as well, she was making the bundle as well. And her, from the tone of her song, it was clear that she was singing a melancholic song, a sad song, a song full of sorrow. Right? And the poet said that, oh, listen to this song, because this song is so much sweet and impressive tone that the whole valley is echoing because of this song. Right? Now, third stanza. No nightingale did ever chant more welcome notes to the very band. किसी भी नाइटिंगेल ने अभी तक नहीं गाया है, बुलबुल ने अभी तक इतने खूबसूरत गाने नहीं गाए हैं थके हुए मुसाफिरों को खुशामदीद कहते हुए. ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, मुसाफिरों को किसी सायेदार नखलिस्तान में, अमंग द अरबियन सैंड, अरब के सहराओं में. So now let's begin the paraphrase. In this stanza, the poet says that the song of this girl was better than the song of the nightingale, which usually sing song to the tired traveler in the Arabian desert in a shady place. In a shady place, when the traveler comes and they take rest, and in that shady place there are some trees, date trees, and in these trees a lot of nightingales are there, and these nightingale also sing very sweet song to the traveler, but the song of that girl was much more better than those song which usually sang by the nightingale. So on the whole, the poet says that that was really a very much impressive and very much good song, and it has captured the whole locality, and it was unforgettable song. तो यही इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया. और नेक्स्ट वन है a voice so thrilling never was heard. इसी तरह पुरजोश और महजूज दिल को खुश करने वाला आवाज़ कभी नहीं सुनाया गया. इन स्प्रिंग टाइम फ्राम द कुकू बर्ड, मौसम बहार में कोयल से भी नहीं सुनाया गया. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो समंदर के खामोशियों को तोड़ती है. एमॉन्ग द पोडेस्ट हेब्रिडीज, यानी हेब्रिडीज के दूर दराज जजीरों में भी. तो अगर हम पैराफ्रेज कर लें, इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट I have never heard such a sweet song from the cuckoo as well, which usually sang song in the ocean area of the farthest Hebrides. Right? And the explanation we will say that we will first of all say that, and then in the explanation the poet phrasing the song of that girl by saying that the song was so much emotional and so much sweet and so much attractive that I have never heard such a song from a koel as well. Right? From a cuckoo as well, cuckoo bird as well. Usually I have seen the cuckoo who sings very sweet song in the isles of Hebrides, but those song of the cuckoo
were not so much sweet as the song of that girl was. The song of the cuckoo break the silence of the ocean, and it also create a very good and very fantastic and very attractive tune to the mind of a person. When a person hearing the song of the cuckoo and those silence and those silent ocean. But so far, if we compare the sing of that girl with the song of the cuckoo, so the song of the girl was much more better than the song of those cuckoo which usually sang song at the Isles of Hebrides, right? नेक्स्ट वन से वेल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है. पोहेप्स द प्लेंटिव नंबर प्लो, शायद वो किसी गमगीन गाना गा रही है. पर ओल्ड अनहैप्पी फॉर फ्लेटिंग, पुराने नाखुश और बुली बसरी चीज़ों की. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या ऐसे लड़ाइयों की जो पहले बहुत पहले गुजर चुकी है. So the paraphrase say, in this stanza the poet says that we don't know the theme of the theme of the song. Maybe it is about some unhappy and some old and some far of things. Maybe the song is about some battles which has taken place long ago. And in the explanation, we will say that in these lines, the poet, when he listened to the singing of that girl, he thought and thought and thought, but he didn't understand that what the girl says, because the language of that girl was not the language of the poet, and it was ununderstandable for the poet. The voice was very much sweet, but the theme of the song was not clear, that what's the theme of the song. Then the poet says that maybe it's about some unhappy event, or maybe it's about some old unhappy event, or some uh, it's maybe about some battles in which a lot of people were killed, and the woman is singing about that. But on the whole, the tune of the song was melancholic one, was a sad one. It was clearly showing that the song belonged to some old unhappy event, but it was not understandable for the poet. Next stanza say, और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या ये कि कोई आम से नगमा थी. फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जानी पहचानी वाक़यात थी, आजकल के आम मौजूदा हालात के बारे में गा रही थी. सम नेचुरल सारो लॉस आर पेन, कोई फितरी दुख, मौत, नुकसान या दर्द थी. दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो गुजर चुकी थी और दोबारा भी आ सकते हैं, या दोबारा ऐसे चीज़ के बारे में था. सो द पोएट इन पैराफ्रेज, द पोएट सेज that maybe that song was about the day-to-day activities of some sorrow, some loss, or some pain, or that has been passed a few days ago, or maybe it was coming back, that sorrow. So maybe the song was that. And an explanation after this reference to the context, we will say that the poet said that it is possible that the song which the girl sings in a sweet voice in a melancholic mood, so maybe it was such a song which was about the day-to-day activities. Someone has died in the home of the girl, and she is missing that person, and she is singing a song about that. Maybe some other events took place, unpleasant event took place, and though these the girl is singing these unpleasant event in the song, and it's also possible that there is some natural pain or some natural events which has passed, and still there is danger to come such and such events which make the family of that girl more and more sorrowful. So maybe she was singing such song, but it was ununderstandable for the poet. But so far the melody of the song were concerned, it was matchless. There was no match of it. Next stanza say, whatever the theme the maiden sang,
थीम ख्वाह मौजू जो भी था, लेकिन ये कन्वारी लड़की गाती रही। एज एफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा दिखाई देता था कि उसके गाने का कोई अख्तिताम नहीं था, सदाबहार सॉन्ग था। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको देख लिया जो अपने काम करती थी और गा रही थी। एंड ओवर द सेकल बेंडिंग, और वो दरानती पर झुकी हुई थी। So in the paraphrase we will write that in this stanza the poet says that I don't know the theme of the song, but that girl was singing continuously, and she was bending on her sickle, and she was walking and singing the song. In the explanation, after reference to the context, we will write that the poets say that I didn't know the theme of that song, but I think it was a melancholic song. She was missing something, and she was remembering these missing things, or these calamities, or these upheavals which took place in the past, and she was remembering them. Maybe it was about the day-to-day activities which has made that girl unpleasant, and she was singing all these things. But the song was continuous one, and it was never ending song. It seemed to me that it was an everlasting type song, and she was singing that again in her sweet voice, and she was bending on her sickle. She was reaping the crop, and she was not looking right or left or any other side. Because of that, she didn't see me and my sister as well. The poet was the poet was working on that journey with his sister as well. So the poet says that she was very much busy in her work as well, and she was very much busy or engulfed in her song as well. She was busy in her work as well as well as in her song, and she was not looking here and there, but the song was ununderstandable for me. And the last stanza says, I listened I listened motionless and still. मैंने इनको बिल्कुल साकिन हालत में और ख़ामोश हालत में सुन लिया. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे मैं पहाड़ पर मज़ीद चढ़ गया अपने मंजिल की तरफ. द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, तो वह मौसीकी अभी भी मेरे अपने दिल में मौजूद है. लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, इससे काफ़ी देर बाद के ये नहीं सुनाई देती है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तक मौजूद है वो गाना. So in this in the paraphrase we will write, the poet says that I stood there and I heard the song silently, and after that I started my journey. And when I was climbing on the mountain, although the song was not audible there, but it was in my heart, and I could enjoy that in the heart of my heart. And in the explanation, we will say that after a reference to the context, we will say that the poet in this stanza says that I stood there silently, so that the girl shouldn't watch me and shouldn't stop her singing. And I listened and listened and listened and enjoyed the song for a long time. After when I enjoyed it too much, so then I started my journey toward my destination, and I was climbing the mountain. When I climbed up to a particular time, so then the sound of the song was not audible, but still the song was in the heart of my heart, and I was feeling all the sensation which was there in that place where the girl was singing, and it's still in my heart. Although the real situation is not there, but the imaginary situation is all the time in my heart, because of the sweetness and of the song, and because of the melody and tone of the song, it's still in my heart. So that's dear student, you should try to listen again and again, try to improve your vocabulary, and in this way try to speak English with each other as well. Already the language videos have been uploaded on detail in the channel, so you should try to watch them as well to improve your English language.
एंड द लास्ट रिक्वेस्ट इज दैट डोंट फॉरगेट मी इन योर प्रेयर, मुझे अपने दुआओं में मत भूलिए, जब भी दुआएं करते हो तो रिमेंबर मी, डू रिमेंबर मी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।